और एक वीक में खत्म। विद इन अ वीक इट विल बी फिनिश। तो फायदा क्या? हार्डली 5 to 6 क्लास लगती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। हाँ, जब तक आपका रिसर्च खत्म होगा तब तक वो 5th बैच, यार आपका भी एक वीक का डिफरेंस है। ओके, सो let's proceed our class, and what we are discussing, क्या पढ़ा लास्ट में? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे खत्म कर दिया था। सो नेक्स्ट इज दो टॉपिक इसमें और समझ। वन इज रिफ्लेक्सिविटी, ये तो 2 मिनट लगेगा। रिफ्लेक्सिविटी मीन्स when a person or when a research basically based on logics, so that is reflexivity। खत्म हो गया, अगला बोलता हूँ। कैसे समझ में आ रहा? अनीता डेली कितने, अब तो एक साल होने वाले ना डेली। हाँ, 7 महीने हो गए। नो इशू। लेकिन मैंने जो अभी आपको इवनिंग वाले में कराया सबसे बेस्ट मैंने लिखा अभी तक। जैसे ऑब्जर्वेशन सबसे अच्छा आपके नोट्स बनेंगे। आई डोंट नो हाउ मच यू हैव डन, बट बहुत अच्छे से मेरा गोल था आपको बताऊं और बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। और one of the nice things Shruti is in life, and so that sometimes he also give the feedbacks, so which are basically a types of okay, see, put the heading, here is reflexivity, reflexivity, reflexivity. So what is reflexivity? Reflexivity means reflection of what? Here is the one word is reflection. That a reflection in psychology that we call them your level of understanding and thinking. Means whenever any individual analyze any reports, any views, any points as per their own knowledge, their own thinking, their own understanding, that is reflexivity। मीन्स किसी चीज को अपने व्यू, अपने थिंकिंग, अपने परसेप्शन के नजरिए से देखना या उसको समझना, एक्सप्लोर करना, सो दैट इज व्हाट रिफ्लेक्सिविटी। इट्स वेरी फेमस एंड सिंपल एंड वेरी पॉपुलर एग्जांपल, रामायण। द रामायण हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय डिफरेंट कल्चर्स like Garhwalis, Humayans, Himalaya, Paharis people have interpreted Ramayana in different style, whereas Maharshi Valmiki has interpreted different style. Getting? What about the Ramcharitmanas written by Tulsidas has interpreted different way? तो एक ही इवेंट्स को हर कोई अपनी तरीके से समझने की कोशिश करता है। So that is what रिफ्लेक्सिविटी। मैं समझाया रिफ्लेक्सिविटी क्या है, लिखो। रिफ्लेक्सिविटी मींस एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग, राइट, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग ऑफ एनी इवेंट्स
as per their own viewpoints, qualities and responses to the objects and responses to the objects, right? Means किसी भी चीज को लेकर, like this marker analyzed by me in a different style as compared to you. My analysis, it is my life, but it is just a marker maybe for you. Is it true or false? Reason being, because your analysis is different from my analysis. In my analysis, its degree of importance is very high, but in your maybe degree of importance is less. Example, God, right? Example, लिख लो. Example, belief in God. हर किसी के अंदर गॉड को लेके अलग अलग बिलीफ होता है. Your belief toward the God is different, and my belief toward God is, होता है ना ऐसा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो. तो ये रिफ्लेक्सिविटी की बात हो. एंड डिपेंडिंग ऑन योर, अगेन रिफ्लेक्शन मीन्स योर थिंकिंग पावर, मीन्स योर लेवल ऑफ एनालिसिस, आपके थॉट के ऊपर डिपेंड करता है. भाई हर घटना को आप अपने व्यू पॉइंट से नहीं एनालाइज कर सकते ना. इफ यू आर एनालाइजिंग एवरी इवेंट फ्रॉम जस्ट ओनली ओन व्यू पॉइंट्स, इट मीन्स यू आर नॉट लिसनिंग एंड परसीविंग टू द अदर्स. इज इट ट्रू और फॉल्स? आप दूसरे को सुनना नहीं चाहते तो समझना नहीं चाहते. सो दैट इज रिफ्लेक्सिविटी. Like sometime you have seen जिद्दी बच्चा जो अपनी बात को ही सही मानता है, दूसरे की बात को सुनना पसंद ही नहीं करता. Right? So the reflexivity may have different types. आगे लिख दो. It have different types. Number one, personal reflectivity. Here is personal reflexivity. Personal reflexivity. Personal reflexivity means which is based on our own values, belief, experience, interest, etc. Values, experience, commitments for analysis of any event. For analysis of any, किसी भी इवेंट को एनालाइज करने का हमारा तरीका आपके तरीके से अलग है. Getting my points? तो that is your reflexivity. Next is methodological reflexivity. It is methodological reflexivity. Methodological reflexivity means a reflexivity means हम अपने मेथड से एनालाइज करें. राइट, लिखना. एनालाइज बाय एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी और मॉडल, बाय एनालाइज बाय एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी और मॉडल अबाउट एनी फिनोमिना. किसी भी फिनोमिना के बारे में हम अपने स्टाइल में, अपने वे में उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. सो दैट इज एग्जाम्पल कैन टेक द सम पीपल एनालाइज महात्मा गांधी इन डिफरेंट वेज.
कुछ लोगों को आजादी लेने का मेथड गलत था. Like extremists analyze freedom in different way, as well as extremists revolutionaries and moderates analyze into different ways. Moderate कहते थे प्लीज बैगिंग करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, प्लीज आप मेरे लिए ये चीज करो. बट देयर वाज अ मैन लाइक बाल गंगाधर तिलक whose method of freedom was different. He said that freedom is our inborn right, I shall have it. This statement given by Bal Gangadhar Tilak. So what is it? Again there is what? Reflexivity. सबके अपने एक ही चीज को अलग अलग मेथड से एनालाइज करते हैं. So reflexivity is involved in any particular methods. हर किसी का मेथड ऑफ एनालिसिस अलग होता है. नेक्स्ट इज एपिस्टेमोलॉजी. It is epistemology. हाँ, epistemology. Here is two important concepts that we use in psychology. First concept is ontology. कभी नाम सुना आपने? नहीं. Ontology या पहले epistemology. Onto, O-N-T-O, ontology. Ontology and epistemology. Ontology means how we view the world, how we view the worlds, how we view the reality of the worlds. That is epistemology. हाँ, नहीं, मतलब मैंने कहा दो वर्ड में आपको बताऊंगा, ontology and epistemology. So what is epistemology? Epistemology means how we view the worlds. So each and every one had different views toward the worlds. हर किसी के अंदर सच्चाई को ढूंढने का तरीका अलग है. So everyone want to different ways, like religion explain the God in different ways. They want to explain these words in a different manner. But so epistemology means how we view the worlds. क्या लिखूंगी? Epistemology means how we view the world's reality. संसार की सच्चाई को कैसे देखती है. And what about the ontology? Ontology means how the reality of earth exists. हाँ, to know the reality of earth exists. जैसे बुद्ध ने अपने तरह से संसार को एक्सप्लेन किया, महावीर स्वामी ने अपनी तरह से एक्सप्लेन किया, तो वो सब क्या है? एपिस्टेमोलॉजी. लेकिन जो फिजिकल साइंस के लोग आए, जो रियली में जो संसार है, देयर इज अ ग्रेविटी, दे आर एक्सप्लोरिंग द रियल लॉज ऑफ द वर्ल्ड्स. तो ये क्या स्टडी करते हैं ऑन्टोलॉजिस्ट? हाउ दीज यूनिवर्सल थिंग्स आर रियली एग्जिस्टिंग. वो अपने मन से रूल नहीं बनाते, बट व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द अर्थ, रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स, दे वांट टू एक्सप्लोर. क्या लिखेंगे? दे एक्सप्लोर द रियलिटी ऑफ यूनिवर्स. They explore the reality of universe. नहीं, अलग है. सिर्फ एपिस्टेमोलॉजी ना, एक तो जो रियलिटी है उसकी बात हो रही, और रियलिटी को हमारा अपना देखने का सबका अलग अलग तरीका है. सो इसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी. सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज disciplinary reflectivity. Disciplinary
reflexivity. So what is disciplinary reflexivity? What is it? Disciplinary activity means the जैसे जो जिस discipline का होगा, like I belong to psychology discipline, so my understanding toward any phenomena is just by the spectacle of psychology. Whereas anyone belong to this other discipline like political science, तो उसमें क्या देखते हैं? Political science के perspective से. Sociologists view the perspective from society. Economists view the things from different, and means each and everyone perceive the words in different ways. हर कोई अलग अलग perceive. As per that discipline means, हाँ right, लिखें. Discipline means, and discipline means reflexivity. Reflexivity concerning with social, political or ideological limits. Right? So reflexivity get it? So initially this reflexivity creates attitudes, right? तो एक पॉइंट भी लिख देना लास्ट में, reflexivity स्टार बना के लिख देना कि it influence our attitudes. It influence our attitudes. It influence our. So reflexivity influence our attitudes. हमारे attitude पे सीधा सीधा फर्क है. Happen or not? नहीं होता. अभी का एग्जांपल अभी जो एक लड़की थी आपसे बात की कौन सी? अभी एक बाहर में कौन? आपसे कुछ इशू हुआ था ना? हाँ. लग नहीं रहा था साइकोलॉजी से, मतलब लग नहीं रहा, मुझे थोड़ा डाउट हुआ था मतलब कितने कैसे मतलब ऐसे ऑफिसर मतलब कैसे काम करेंगे ऐसा मतलब लगने लगता है. जो उनका लैंग्वेज था, जिस तरीके से उनके थॉट था, एटलीस्ट आपसे बातें कर रहे थे, बात करें क्या? थोड़ा 2 मिनट में मुझे बात की और थोड़ा लगा मुझे कैसे ऐसे हो जाता है. हाँ. सर वहाँ ये अप्रोच काम नहीं करता है, ऐसा लग रहा है. हाँ. क्या कह रहे थे? जैसे सेरेबल तो डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड शेयर कर. क्या था? मतलब बोलो. मतलब सर वो कह रहे थे कि मतलब सर का हो नहीं पा रहा है, स्टाफ की कमी, वो तो मतलब जो सब जो खुल के बोल. तो इतना ही काम है. मैंने बोला कोई बात नहीं, उनको पैसे चाहिए थे सर. हाँ. तो बस मैंने बोला कि आप पेशेंस रखिए, आपको पैसा आपको मिल जाएगा. बस क्या था तो मैं अंदर आ गई, ज़्यादा नहीं. कोई बात. अच्छा, तो आपसे क्या बातें कर रही थी? ठीक नहीं होता, उससे ज़्यादा नहीं सर. Actual में that man has come. हमारे यहाँ 2 मैम थी, बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइप की थी, तो उनके समय में लोग के एडमिशंस हुए. 2 लोग थे हमारे यहाँ. हमारी जर्नी को खराब करने में थोड़ी बहुत जो ऊपर नीचे किया था 2 मैम कहा, पता नहीं क्या बोल जाते हैं, मतलब जो रियलिटी वो चीजें बताओ आप. है वो एक गलती हुई, so everything I am justifying. She is not ready to listen, right? And whatever is there, तो ये एक कह सकते हैं कि बहुत वो जीवन में सिविल सर्विस बनने लायक थी. वो फर्स्ट डे ही मुझे समझ में आया.
she do not have any components of civil service. So मैंने एक और भी देखा है मैंने कैसे? मैं वेस्ट में जाती थी वहाँ पे मैंने देखा था कि उनका लैंग्वेज इतना खराब है उनका ड्रेसिंग स्टाइल भी मतलब थोड़ा डिसेंट टाइप का होना चाहिए और वो कह रहे थे कि इंटरव्यू में जाकर मैंने बेस्ट मुझे लगा कि शायद मेरी मतलब क्राइटेरिया हो सकता है रिजल्ट का वो देखो एक आपकी बहुत सारे समय परिस्थितियां सिचुएशन ये एडवर्स आएंगी और जाएंगी, बट जो ह्यूमन का एक नेचुरल स्वभाव है ना वो उसको लूज नहीं करना। कर दोगे तो क्या होगा? अगर हम यहाँ की सिचुएशन हो रही थी ये भी एक तरह का उसका पार्ट ही होगा। करेक्ट, राइट। द थिंग्स आप हर चीज को इतना फ्रस्ट्रेटेडली ले रहे हो कि मतलब उतना कोई है नहीं सामने वाला, नहीं कभी भी किसी भी बच्चे को नहीं करना। खैर मैं तो बड़े प्यार से हैंडल करता हूँ, कभी कभी मैं अपना रुद्र रूप दिखाता हूँ। मुझे लगा आपसे इतना एग्रेसिवली क्यों बात कर रहे हैं आप, मतलब इतने तो मतलब सर को इतने गुस्से में क्या बात कर रहा है? अच्छा सर मतलब आपसे इतने गुस्से में किससे बात कर रहा है? हाँ, तो वो वही कह रहे हैं ना, उसका नेचर है। एक तो पूरे मेरी जर्नी में बैठे हुए थे, जब से सामने बैठे थे, पेशेंस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब मैं खैर आप मेरे को बुरा बोल भी जाओगे ना तो भी मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा, ये मेरी आदत है। अरे दिस इज वन ऑफ द माय बिगेस्ट ड्रॉबैक कि आपको मैं मेरे बारे में आप कुछ पर्सनल भी बोल जाओगे, बट आई विल नेवर से, मैं भी तो बोलने की लाइन बोल दूं तो जिंदगी भर। एक टीचर ने बोल दिया था यहाँ पर एक सर थे, बच्चे को बोल दिया कि तुम कितना भी पढ़ लो तुम्हारा सिविल नहीं होने वाला, कितना भी पढ़ लो। इतना बोल दिया जिस दिन तुम हो गए उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूं, क्योंकि उसमें कंपोनेंट नहीं है। इतना तो हमें भी तजुर्बा हो ही गया। मैंने नहीं बोला था, खैर मैं कभी किसी बच्चे को नहीं बोला। अब वो भागे भागे मेरे पास ऊपर गए, बोले सर ने मेरे बारे में सोचा। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने खैर बीइंग अ मैनेजर आई हैव हैंडल दैट सिचुएशन, तो नहीं बोलना चाहिए। द थिंग्स हम अपने एक बच्चों के लिए काम करते हैं, सिंगल चाइल्ड, आई वर्क फॉर द सिंगल चाइल्ड। As you mentioned कि I'll come in evening, I said okay I will do. हमसे गलतियां हुई, मिसइंटरप्रिटेशंस हुई, आप अकेले बैठ के पढ़ो। मेरी जिंदगी के कितने घंटे, 450 घंटे जाएंगे, कोई बात नहीं, जाने दो। बट एक बच्चे को वो तो चीजें हम देना, हम अपने हर बच्चे को टेस्ट सामने बैठ के चेक करते हैं। कभी ऐसे हुआ अगर बच्चे का मूड, हाँ कई बार मेरे पास भी टाइम नहीं होता, नहीं कर पाता, बिकॉज मैं 7 डेज सर्विसेज करता हूँ बच्चों की, राइट। सो व्हाटएवर इज देयर, तो मीनिंग मैं कभी, आप मेरी क्रिटिसाइज कर लो, वो मेरे लिए अच्छा है, बट मैं नहीं करना पसंद करता। अब मैं बोल दूंगा तो खैर वो मेरे लिए बच्चा ही है भाई, ये कहते हैं ना मिनिमम। तो जीवन में एडवर्स टू एडवर्स टाइम भी आ जाता है, मोस्ट एडवर्स टाइम। और सिविल सर्विस का एथिक्स का पेपर यही तो है। एथिक्स के पेपर थोड़ा सा लंबा कर दिया, सारा सच्चाई लिख के चले आए, अब एक्चुअल में हो गया, सारा पता चल गया। कितना बढ़िया दिमाग खेला। कितना बढ़िया दिमाग खेलते, पेपर लंबा कर दिए, अब लंबा हो गया तो घिस हो गया। कितना कितना संभाल के लिखोगे, ऑटोमेटिक कुछ सब लिखोगे ही लिखोगे, अब प्रेशर भी है। तो ह्यूमन माइंड के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है ना तो उसका अंदर का स्वभाव बाहर निकलता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरे स्वभाव में ये है, मेरा कोई एम्प्लॉय नहीं कह सकता कि सर ने मेरे साथ चीट किया। मेरे स्वभाव में यह है कि मुझे लोग नुकसान पहुंचा के गए, हाँ मेरे पास कई बार रिसोर्सेस स्कॉर्स हो गए हैं, साफ बोल दिया वहां बात, भरोसा नहीं चेक ले, क्लियर बोल दे, ऑनेस्टली बोल दे, तो भाई मेरा रिफ्लेक्सिबिलिटी है। कोई इस धरती पे नहीं कर सकता कि मैंने उसके 10 रुपए मांग लिए, नहीं सर मेरा नेचर है, फितरत है, कोई भी, दिस इज माय रिफ्लेक्सिबिलिटी। और दैट मैं एक थोड़ा सा मुझे
कम्युनल आइडियोलॉजी के मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। एंड कम्युनल आइडियोलॉजी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि वो मिनिमम अमाउंट में मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल जेएनयू। सो दैट आई बिलीव कि बच्चे को क्या क्या दे दो, हर चीज पैसे थोड़ी ना दी जाती है सर। और दैट ट्रू एजुकेशन जो मैंने ली है, true education I believe to serves. What is true education? True education means you respect your teacher more than your father, and you should respect your students like your son. अब उस केस में क्या हुआ, उसने बोला सर मुझे अपने स्टाइल में लिखना। मैंने बोला कि भाई आपके स्टाइल में टेस्ट बना दिया। बोला सर मुझे ये चीज चाहिए। मैंने कहा चलो, मैम ने कहा होगा तो मैं अभी दे दूंगा, और बताओ। हाँ, थोड़ा सा एक डिले हो गया। मैंने कहा उसके लिए भी सॉरी बोल दिया, अपोलोजाइज कर दी। मैंने कहा भाई चलो, हाँ मेरी तरफ से एरर हुआ, आप इसको मैं करेक्ट करने के लिए तैयार हूं। बट तो तुम पहले से भरे पड़े हो तो मैं क्या भरूंगा उसमें, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। सर आप जाओ जाओ, एक ही चीज। और रही बात अच्छा बुरा, सर्विस आप भी करोगे ना। यू कैन नॉट सेटिस्फाई टू द 100% पीपल। कुछ ना कुछ हर किसी का रह ही जाता है। सो आई वांट टू से basically to you, reflexivity means each and everyone have their own way of analysis, right? हर किसी का बस सर मेरी एनालिसिस है कि अपने तरीके से एनालाइज कर। नेक्स्ट अगला। So reflexivity have an exceptional power. That is, हाँ डिसिप्लिन वे लिख रहे थे ना, तो लास्ट में कहाँ लिखा था? It also influence our attitudes. तो एटीट्यूड्स मींस हर किसी का एटीट्यूड अलग अलग होता है, वो उसकी रिफ्लेक्सिविटी से आता है। कुछ चेहरे देख लो तो साफ नजर आएगा कि बड़े गुस्से वाले। इज इट ट्रू और फॉल्स? ये बहुत झगड़ालू टाइप, बहुत फाइटिंग वाला नेचर का, अवॉइड करो भाई। Some faces are like that because that's reflexivity they have developed. Getting? Next is, so reflexivity as a check for reflexivity have an exceptional power to analyze any of the psychological events. Like one of my friend नहीं बोलूंगा मैं, one of my student said सर आप इस्लाम को फॉलो करो। तो उसको ऐसा फीलिंग थी कि इस्लाम में अगर कोई आ गया तो जन्नत मिलती। She has given the example of A.R. रहमान। So मैंने कहा बेटे अगर मुझे जन्नत मिलनी होती तो पहली चीज तो मैं इस्लाम में ही पैदा होता। मेरी रिफ्लेक्सिविटी क्या होगी, राइट? मैंने कहा कि अगर मुझे मिलनी होती तो मैं पैदा हुआ होता, और नहीं मिलनी है इसीलिए मैं इसमें पैदा हुआ हूं। अब रहने दो, अब क्या फायदा? इज इट फॉल्स? सिमिलरली वंस एक पर्सन, मेरे फ्रेंड थे तो बैठे हुए थे, तो मैं कुछ नहीं ऐसे सुन रहा था। बोले यार तुम बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते हो, तुम इसको साफ क्यों नहीं करते हो? अच्छा लगेगा, नेचुरल फेस है, खूबसूरत लगेगा, इतना बढ़िया प्रकृति ने तुम्हें फेस दिया। अब नेचुरल बोले जा रहे, 2 बार बोल दिया। नॉर्मली ह्यूमन में रिएक्ट करने के लिए 1-2 बार चांस देना चाहिए।
but that if that reaction is made by them continuously, so उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो इंटेंशनल रिएक्शन बना रहा। तो मैंने कहा ये बताओ, बल्कि तुम्हें दाढ़ी रख लेनी चाहिए। बोले आप क्यों नहीं रखते हो? मैंने कहा मेरे पास से वाला लॉजिक है ही नहीं। तो प्रकृति ने अगर सेविंग दिया है तो बड़ा होने कुछ रीजन रहा होगा तभी तो दिया है। रहने दो। So I was also listening some बाबा, उस दिन भी सेम बात बोल दी कि भाई आप सर बाबा बड़ी बड़ी दाढ़ियां क्यों रखते बाबा लोग सारे? उसने बोला बेटे क्योंकि हमारे पास पर्सनल चीजों के लिए टाइम नहीं। खैर उसका लॉजिक अलग था, बट व्हाट वाज देयर कि ये अब देखने का देखो तो सेविंग है, उसको देखने का नजरिया अलग है, और नहीं भी है तो उसको देखने का नजरिया अलग। सो मींस एक ही इवेंट को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। Like some people say Subhash Chandra Bose has given tremendous contribution in the development of in Indian national freedom, but कहते हैं कि नहीं कम दिया। So that the perspective is different. राणा प्रताप को जिस तरह से एक आइडियोलॉजी को लोगों ने एनालाइज किया, दूसरी आइडियोलॉजी को लोग अलग तरह से एनालाइज करते हैं। Is it true or false? So each and everyone have different reflexivity. हर किसी के पास अलग अलग रिफ्लेक्सिविटी होती है जिससे वो किसी भी इवेंट्स एंड फिनोमेना को एनालाइज करे। So reflexivity is basically methods by which we analyze any phenomena or any events. किसी भी फिनोमेना या इवेंट्स को हम लोग राइट। तो इसमें बहुत ट्रेमेंडस पावर है। कोई पूछे कि रिफ्लेक्सिविटी में ट्रेमेंडस पावर क्यों है? Because each and every ideology or each and everyone have different views and perspectives. So if any phenomena analyzed by the various perspective, that will be definitely broad. Example, psychology. Psychology, as I mentioned in a first class, कि एक अंधों के शहर की हाथी है या अंधों के विलेज की हाथी है। I have given I hope this example in classroom कि एक अंधों के विलेज में हाथी गई और हाथी को सब लोगों ने अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया। Same as psychology which is intangible, it is interpreted by behaviorists in a different ways, whereas gestaltists interpreted different ways and other approaches of psychologists interpreted different ways. तो हर कोई अपना अलग अलग तरीके से इसको एनालाइज करने की कोशिश करता है। Is it? So psychology भी कहां से आ रही है? डायरेक्टली अलग डिफरेंट रिफ्लेक्सिविटीज है। सो ऐसे किसी टॉपिक को हम अगर एनालाइज कर रहे हैं, सो इट विल बी ब्रॉड टू मच टू एक्सप्लोर द फिनोमेना और इवेंट्स इन डिटेल। तो किसी भी फिनोमेना को बहुत डिटेल में इसमें एक्सप्लोर करने की next is there reflexivity. Have several implications. Number one, to analyze any psychometrics, analyze and development of any psychometrics, development of any psychometrics.
Next is used for ऐसा introspection, inter-subject reflections, social critics. Social critics means same event can be analyzed in a different ways. And next method is what? Focus group discussion. No, focus group discussion तो हो गया नहीं. एक और लिख लो फिर आप लिखना फोकस ग्रुप डिस्कशन. That is triangulation. Fixed heading in your copy. That is triangulation. Triangulation. एक्चुअल में ये भी नया मैथ है. जैसे फ्लेक्सिबिलिटी एक नया कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगुलेशन भी एक अपने आप में नया कॉन्सेप्ट है और बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट. So what is triangulation? Triangulation means combination of two or more method or the ideology or a base to do any research. So triangulation means it is what? Triangulation. Triangulation means किसी भी इवेंट को एक से ज्यादा more than one perspective से ज्यादा एनालाइज करें, डेवलप करें. So what is that? किसी भी इवेंट्स को एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव से डेवलप करें, एनालाइज कर सकते हो. So that is right. जैसे इमेजिन करो हम लोग किसी एक मेथड से रिसर्च कर रहे हैं, but that method is not sufficient. So we may combine two or more methods for developing, for getting better results. That is triangulation. Example, psychoanalysis. थेरेपीज ने एक से ज्यादा मेथड अपनाया to develop better interpretations. लिख दे. Triangulation is a combination of at least two or more theoretical perspective, comma, methodological approaches, comma, data sources, investigators, or counterbalancing the deficiency of single strategy. No, माफ करना, कहाँ लिख दिया आपने? गलत हो गया. इन्वेस्टिगेटर्स, गेसन लिखा, इन्वेस्टिगेटर लिखो. इन्वेस्टिगेटर और द डेटा एनालिसिस मेथड, फुल स्टॉप. और डेटा एनालिसिस मेथड मींस किसी भी इवेंट को एक से ज्यादा तरीके से जब हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, दो मिनिमम दो, उसका डेटा दो से ज्यादा तरीके से कलेक्ट करो, उसके एनालिसिस दो से ज्यादा तरीके से करो, एंड उसमें उसके मेथड्स को ज्यादा दो से ज्यादा तरीके से एनालाइज करो. सो दैट इज व्हाट triangulation. So triangulation is basically a method by which so how many types of triangulations? We have a different types of triangulations. हम पहला ट्रायंगुलेशन किसका बना सकते हैं? डेटा.
मतलब किसी भी डेटा को एक से ज्यादा तरीके से एनालाइज करें, कलेक्ट करें, सो दैट इज ट्रायंगुलेशन। आसान है ना, कितना सिंपल है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ, तो ये बहुत simple। एक से ज्यादा बेस से means a researcher uses more than one base to collecting data, so that is data triangulations and investigator triangulations. Investigator triangulations. Investigator triangulations means more than one investigators are involved for the single topics, like cognitive development done by Jean Piaget and Indresh Rao and Mayank also. So that is what triangulations. At least two, more than two, at least two मैंने बोला है ना, दो से ज्यादा investigators लगे, so that is triangulation. Next is methodological triangulations. नाम से पता चल जाएगा। The methodological investigations, methodological triangulations means while we are applying more than one method or more than two methods for analysis of data, that is methodological triangulations. So the next is theoretical triangulations, मतलब to understand any phenomena by more than two theories. बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। ट्रायंगुलेशन मतलब डेटा कलेक्ट नहीं, ट्रायंगुलेशन का मतलब दो या दो से ज्यादा मेथड से कोई भी टास्क करो, दो से ज्यादा इन्वेस्टिगेटर हो गए, दो से ज्यादा मेथड हो गए, दो से ज्यादा तरीके से डेटा कलेक्ट किया, तो ट्रायंगुलेशन हो गया। Theoretical triangulations. If you want to analyze anything, so you should use more than two theories. So that is theoretical triangulations. अच्छा है ना, theoretical triangulations। इससे क्या होगा? That data will be vast, and vast data का मतलब क्या हुआ? There is a huge chances of a big, and big analysis will reduce errors. If anything have least error, which means high reliability and validity. So triangulations have high reliability and validity. So this is the first advantage, because एक से ज्यादा तरीके से आपने एनालाइज किया हो। दूसरा एडवांटेज, ये टेक्निकल है क्या? नहीं, it is not technical, because one researcher is doing their own style, other is doing other. So after the combination of both style, आप उसको, after the analysis of both style, you should combine to them. तो क्या लिखेंगे? It is possible, which is less technical, you can say less technical, उतना टेक्निकल है। Next, deep involvement over the topics. किसी भी टॉपिक्स के अंदर आप बहुत डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं, which is good for being a researcher. So deep involvement over any topics, over any issues, over any themes. So that is again very nice. Next is using different method of gathering research. अरे वो तो हो गया, बस छोड़ दो, कट कर दो, नो नीड, नो नीड। What are the disadvantages?
डिसएडवांटेज हो गया वॉस्ट डेटा, एनालिसिस विल टेक टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंजम्पशन ज्यादा होगा इसमें, इतना लंबा डेटा कौन एनालाइज करेगा, बोलेंगे लोग कैसे करूं कहां से करूं। ये सब में डाल सकते हैं। रिसर्च के हर पॉइंट्स में आप डाल सकते हो टाइम कंज्यूमिंग, एवरी दिस में एडवांटेज में डाल सकते हो। अब आप लिखेंगे इसको, इट इज मोर एप्लीकेबल इन कंटेम्पररी साइकोलॉजी, this triangulation is more applicable in contemporary psychology because human behavior become more complex. Yeah, human behavior is not too much complex, very difficult to interpret. वो बहुत डिफिकल्ट है किसी चीज को इंटरप्रेट करने का। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट दिस डेटा। तो इसीलिए ट्रायंगुलेशन मेथड हैव अ डिसएडवांटेज। हर किसी को नहीं आएगा इतना सारा डेटा, इतना मेथड्स, मे बी रिसर्चर इज नॉट अवेयर अबाउट दैट मेथड्स, सो इट इज प्रॉब्लमेटिक। सो ट्रायंगुलेशन समझ में आया क्या है? एक ही फिनोमेना को दो से ज्यादा रिसर्च मेथड से जब आप एनालाइज करते हो, दैट इज कॉल्ड बेसिकली। एंड अभी तक जो दोनों पढ़ाया है ये यूपीएससी सिलेबस में डायरेक्टली इट इज नॉट मेंशन, it is not directly mentioned into the UPSC or just syllabus. ग्राउंडेड थ्योरी पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हुआ? एक बार देखो आपने पढ़ा पूरा हो गया, ग्राउंडेड हो गया ना। नेक्स्ट इज फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन focus group discussion. Okay. So we will discuss here focus group discussion, which has been asked by examiner and it is directly mentioned in our syllabus. So आपके syllabus में directly mentioned है and you need to do this by self. See, focus group discussion. Focus group discussion. Focus group discussion, it is shortly called FGD. 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 What is this? पहले इसको समझो। Focus group discussion initially collective conversation. What? Collective conversation with purpose. मीन्स 10-12 लोग किसी एक टॉपिक के ऊपर बैठ जाए और उस पे एक फोकस्ड हो करके उसके ऊपर डिस्कस करना शुरू करें, उसके प्रोस कॉन्स मेरिट डिमेरिट। वेरी सिंपल एंड वेरी पॉपुलर एग्जांपल, ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट्री have many committees, only few committee have a large number of members, otherwise normally committee में कितने members हैं? 10 to 12, right? So focus group discussion क्या लिखेंगे? Focus group discussion
a qualitative method which is called collective conversation. Collective conversation. Collective conversation with the purpose. With the purpose. हम कुछ पर्पस को पूरा करने के लिए सब लोग मिल करके जब कन्वर्सेशन करते हैं, so that is collective conversation. And this concept was very much uh, emphasis by one of the Japanese psychologist. नाम उसका बहुत टेढ़ा है, अगर आप लिख सकना पसंद करेंगे तो LIA लिम्प बहुत टेढ़ा नाम, मुझे भी स्पेलिंग नहीं है। हाँ, लिम्प टिंगो कर, इसको क्या लिखो पढ़ोगे? लियम पिटोंग। हाँ, लियम, ठीक है बोल लो, अब ज्यादा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। लियम पिटोंग। Liam Putong has worked a lot on the focus group discussion, and he says that normally in a collective conversation there should be 6 to 10 members. How much? 6 to 10 participants, and they should discuss at least 2 to 3 hours over any topics. किसी भी टॉपिक्स के ऊपर 2 से 3 घंटे तक कन्वर्सेशन करते हैं। एंड अभी याद रखना विद पर्पस कन्वर्सेशन करते हैं, क्योंकि कई बार हम जैसे चाय की दुकान पे चाय की टपरी पे कन्वर्सेशन करते हैं, सो दैट इज नॉट अ फोकस ग्रुप डिस्कशन, because there will be no conclusion and no any types of development will take place. All the things will just goes into the waste materials. Getting? तो क्या लिखेंगे आप? कलेक्टिव कन्वर्सेशंस। हाँ, एंड participants construct the social reality. Construct the social reality about any conventional or dynamic scenario. Yeah, dynamic issues, not a scenario, it's about dynamic issues. So means these peoples, right, may have one of the जो उसको मैनेज करेगा, so there will be a type of manager, yeah, who will organize the meetings. So there is a basically type of managers. Manager means a type of leaders who will basically coordinate among the all members conversations. Like right now Lok Sabha speaker, Raj Sabha speaker, but our Lok Sabha speaker and Raj Sabha chairman, extremely sorry, है ना? So they are doing, but there is a population is not 10 to 6, there may be 250 or maybe less or more than that. हाँ जी जी, ग्रुप 20, ग्रुप 10, ग्रुप 7, G7 की मीटिंग्स होती है, तो दैट इज द टाइप ऑफ फोकस ग्रुप डिस्कशन. एंड दिस in this one there is a open-ended questions. Open-ended questions are there, means each and every one can participate. Each and every one have right to participate in them, and they are fully freely frequently can discuss over any topics. किसी भी टॉपिक्स के ऊपर आसानी से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. So that is open-ended. कौन आ रहा है क्या? Right?
So focus group discussion आगे. There is a type of interview. Yeah, it is a type of interview. In particular situation. In particular situation. And every moment of the focus group discussion being recorded or data has been collected. Data उसका collect किया. तो हर मूवमेंट का कुछ ना कुछ हम क्या कलेक्ट करते रहते हैं, डेटा. एंड दैट डेटा को कलेक्ट किया, एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया. नेक्स्ट आगे अगला पॉइंट्स. ईच मेंबर ऑफ द फोकस ग्रुप डिस्कशन हैव सम स्पेसिफिक expertise क्या नाम है, होमियोपैथी का. चलो नेक्स्ट इज have some subjective experience, some expertise, experience, knowledge about right about any things जिसके बारे में focus group discussion होता है. Like each members in the focus group have some expertise, they have some conversations, they have some discussions. वो सब चीजें उनके पास में अच्छा नॉलेज एक्सपीरियंस होता है. राइट, अब स्टेप क्या होगा लिखेंगे. स्टेप्स ऑफ फोकस ग्रुप डिस्कशन. स्टेप्स ऑफ फोकस group discussion. Focus group discussion. What are the steps adopted by focus group discussion? In a focus group discussion, first topics were introduced by the लगातार फोन आ रहा है, एक मिनट.
So first of all, topics will be introduced by, briefly introduced by that who will be participants. तो सबसे पहले टॉपिक का एक ब्रीफ दिया जाए, ब्रीफिंग कर दी जाएगी और उसका पर्पस क्या होगा वो बता दिया जाएगा। एंड उसमें ये भी बता दिया जाता है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस डिस्कशन, पर्पस क्या है। देन सेकंड स्टेप, participants are asked to introduce themselves, मीन्स ईच पार्टिसिपेंट को हम मौका देंगे कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करे, राइट। राइट, गुड इवनिंग बेटे, ओके, गुड इवनिंग टू ऑल, राइट, to be good evening, right? So here is what we will do. Participants are asked to introduce themselves to the groups. उससे बोला जाएगा सर आप अपने बारे में बताओ। Then discussion is structured around the key themes, right? Introduction of participant के बाद then discussion, start discussions और थीम के आसपास में ही पूरा ग्रुप डिस्कशंस होने हैं और that discussions are structured around the themes because sometimes that discussions may lead towards personal issues, right? कभी-कभी ऐसा देखा है कि लोग पर्सनल अटैक करना शुरू कर देते हैं डिस्कशन में, ऐसा होता है कि नहीं होता, स्पेशली इनटू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। हाँ, कि आपने 3 भैंस वहां से चुरा ली थी तो हमने 5 भैंस चुरा ली, तो क्या हुआ, आपने भी तो भैंस की चोरी करी थी। एंड सो दिस इज अ बेसिकली टाइप ऑफ फॉल्स आर्गुमेंट। और अभी के समय में तो क्लियर हो गया रामचरितमानस की कि आपन तेज समारो आपो। हाँ, तो मीन्स आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालो, किसी भी गवर्नमेंट के भरोसे मत रहना कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब देगी, कभी भी आप इस भरोसे मत रहना कि आपको कोई गवर्नमेंट चीजें सस्ती कर देगी, इस भरोसे मत रहना कि प्रीवियस गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी तो प्रेजेंट गवर्नमेंट खराब होगी। सो बिकॉज अब सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको खुद निकालना पड़ेगा, बिकॉज राइट नाउ वी नो द रियलिटी। सबको पता है कि मैं गलत हूं, बट फिर भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं कि मैं गलत हूं। दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। क्यों? क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ा हूं। इट्स बेस्ट एग्जांपल इज आवर करंट प्राइम मिनिस्टर। आवर करंट प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन स्टेटमेंट कि भाई वुमेन इश्यूज चाहे वो राजस्थान में हो, बंगाल में हो या मणिपुर में हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। So I agree with this statement. This is right. But if you need to basically work toward the Manipur, so that is better. So because being a leader of the country, maybe many followers are there. Even your government into the Manipur, आपको अपने followers से बोलना चाहिए, like जैसे डिजास्टर आ जाता है, so disasters में we forget about religions, we forget about the caste, culture, all types of disputes हम किनारे रख देते हैं। Similarly, अगर कहीं पर कोई भी वायलेंस हो रहा है, so उस समय वायलेंस को रिमूव करने, वायलेंस से लड़ने के लिए you need to basically put all the politics into the separate bag. You need to put all your issues and agenda in separate bag. You should focus only on the resolving of that issues. अब दोनों इवेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। One is the problem of law and order, other is the problem of the crisis.
लॉ एंड ऑर्डर इशू इज नॉट अ रिलेटेड विद कैसे आप दोनों के की पैरामीटर्स जस्टिफाई कर सकते हो। बीइंग अ ब्यूरोक्रेट्स आर एबल टू जस्टिफाई द सेम थिंग 100%। तो ये हमें डिस्कोर्स को लाना चाहिए। तो in the discussion basically each and everyone, every participant express their views, their opinions, their concept toward the any topics, और वो अपनी बातें वहां पर कहता है और मजे से कहता है। Then next is important to ensure all participants takes active part in the discussion। तो सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। So participating actively not in discussion. डिस्कशन मीन्स राइट। सो आफ्टर द डिस्कशन खूब सारा डिस्कशन हो गया। सपोज देयर इज अ डिस्कशन ऑफ 2 to 3 hours। So after completing 2-3 hours, at least after completing 2 hours discussion, we should give a short span of time for the some issues or the to raising some issues or to for the some criticisms। मतलब 2 घंटे बहस हो गई, आधे घंटे तो कम से कम आप लोगों को इस बात के लिए दे दो कि आप इसकी क्रिटिसाइज करो। Because check and balance is one of the important source to correct the behaviors and for taking a better decision। check balance is very important। so हमें क्या करना है कि जितने पार्टिसिपेंट हैं सब पार्टिसिपेंट को मौका दें। लिख देना आफ्टर डिस्कशन short time should given for unsatisfactory issues। unsatisfactory issues। Right, next is FGD guides utilizations of resources। and after that we put all the discussion into logics or it in a sequence। सारी बातों को एक सीक्वेंस में रख करके देखो। putting all the discussion into sequence या all the findings into sequence, arrange all merits and demerit in sequence, right? then after that अब उसको क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भारत में open defecation is one of the big issue। on paper the government of India has resolved, but by the attitudes I think right now around 20% people they are doing open defecation। is it true or false? due to the attitudes उनको घर के अंदर वॉशरूम करना अच्छा नहीं लगता। so open defecation is one of the big issue। it need to discuss especially because on this issue there is a not involvement of the single player। this issue can resolve by the several players। number 1 जैसे किसी एरिया में ओपन डेफिकेशन हो रहा है तो उस एरिया के पहले सरपंच को बुला लो, हेड ऑफ द विलेज को पकड़ लो। भाई ये तेरा एरिया, तेरा दिल्ली की भाषा तेरा मेरा ही चलता है ना भाई, ये आपका एरिया है और आपके एरिया में मुझे ओपन डेफिकेशन नहीं चाहिए। तो बोलेगा
क्योंकि जो सरपंच और द हेड ऑफ द विलेज मुखिया जी इज अ बेसिकली इलेक्टेड पर्सन, और कुछ उसके फेवर में रहे, कुछ अगेंस्ट में रहे, कुछ तो जबरदस्ती जाएंगे क्योंकि इसकी सिस्टम को फेल करना। देन टेक द अदर मेंबर्स, तो अभी एक मेंबर मिला, फिर वीडीओ, वीडीओ मींस विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की बात कर। some maybe cooperative peoples or NGOs members are there, जो block या ward members होते, they should also sit on that issues, and that district level का officer को किसी को बुला लो, engineers को बुला लो उसमें, right? तो means जो toilet issues हैं, especially open defecation issues हैं, इसको resolve करने के लिए अलग-अलग expertise को बुलाओ। Maybe सफाई कर्मचारी will be also there because वो इसका ज्यादा अच्छा solution बता पाएगा, लोगों का attitude क्या है। So by the gathering of the through the gathering of the mass of the peoples, सब लोगों को इकट्ठा करो और इकट्ठा करके उनको किसी भी इश्यूज पे डिस्कशन करो, राइट? तो जो टॉयलेट इश्यूज हैं, बहुत ऐसे प्रॉब्लम, जैसे चाइल्ड सेफ्टी का इशू, and its best example खाप पंचायत। खाप पंचायत, I hope you have heard खाप पंचायत। खाप पंचायत mainly into active into पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। जैसे अभी जो रेसलर इश्यूज हुआ था, तो सारी खाप पंचायत के लोगों ने उस इश्यूज को एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद उन बच्चों को बोला कि आप लोग प्रोटेस्ट करना बंद करो, हम आपके लिए लड़ेंगे, क्योंकि वो बच्चे अपना मेडल फेंकने यमुना जी में हरिद्वार चले गए थे। आई होप यू हैव हर्ड। तो उस इश्यूज को रिजॉल्व, क्योंकि दे नो द मूड्स, जो एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी मींस वेयर इनफॉर्मल पीपल कम्युनिकेट फ्रॉम द बोथ ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स के लोग बातें करेंगे ट्रैक टू डिप्लोमेसी में। सो कई प्रॉब्लम्स को ऐसे हम लोग फोकस ग्रुप डिस्कशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल ओपन डेफिकेशन इश्यूज एंड जेंडर इश्यूज एंड मे बी एनी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल इश्यूज आल्सो। जैसे मेरा एक सपना है कि अगर कोई बच्चा ऐसा ऑफिसर बने और करे तो बहुत अच्छा लगे। Like according to me, each village have a small storage system somewhere. हर विलेज के अंदर एक स्टोरेज जरूर होना है। Like if village size is just like 10,000 people. Like या एक विलेज में कितने लोग होते होंगे? 1000 तो होते होंगे मिनिमम, उससे ज्यादा नहीं होते ना? Depending on the size of the village. So around 1000 or just like 500 or 800 people are there. Just maybe sometime 2000 people is also. एक विलेज के लिए एक वेयर हाउस बना दो और उनको बोलो कि आपके घर में कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा होता तो स्टोर के अंदर रखो। What will be the benefit? Yes, that can resolve the crisis management. That will helpful in crisis. अब ये जो वेयर हाउसेस, आई एम टेलिंग यू अबाउट द स्टोर कोल्ड स्टोरेज की जो बात मैं कह रहा हूँ, तो वो कोई अकेले की बस की बात नहीं है। It is possible to participate different player, warehouse को या फिर cold की मेरे मन में बात आ warehouse है। cold house को बनाने के लिए सबसे पहले लैंड चाहिए। तो लैंड कहाँ पर बनेगा? विलेज पंचायत की लैंड पे बनेगा। विलेज पंचायत की लैंड को कौन बता पाएगा? दैट जो वहाँ का रेवेन्यू ऑफिसर होगा, ठीक, जिसको लेखपाल बोलते हैं शायद, लेखपाल एंड कानून गो इन सम पार्ट ऑफ यूपी में। हाँ, एंड आप यहाँ क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? लेखपाल। कॉलेज में भी था लेखपाल। हाँ, तो ओके, अलग हो सकता है बिकॉज सब्जेक्टिव नेम्स आर देयर। सो दैट दे उनके पास लैंड रिकॉर्ड है, वहां से लैंड रिकॉर्ड निकलवाना पड़ेगा कहाँ पर हम फ्री लैंड है। सेकंड, फंड नीड्स। फंड के लिए आपको पॉलिटिशियंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट लेना पड़ेगा। देन कोल्ड स्टोरेज बन गया, लोगों तक उसका सही मैनेजमेंट हो प्रॉपर, उसके लिए अदर एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी। सो दैट द जो कोल्ड स्टोरेज सिस्टम विल बी अ गुड
for a development of any village. इससे मैं सिर्फ मेरा सपना इसलिए है कि इससे बहुत सारे फूड जो विलेज के अंदर खराब हो जाते हैं। मैं फूड को थोड़ा सा सेंसिटिवली समझाना चाहता हूँ। We have two types of food wastage. One is cooked food wastage. Cooked food wastage we have seen especially into the big malls, big hotels, and even into the marriage systems or many ceremonies and festivals. Is it? कितना सारा food waste हो जाता है. So we need to write food banks. हमें food bank बनाने की जरूरत है. So that food bank because उसमें analyze करना पड़ेगा medical microbes, different dimensions of analysis is required. Like in India, there is a cooperative societies. Cooperative societies resolve the many issues of the society. Its best example Amul. Amul is a basically cooperative society. जो मिल्क प्रोडक्ट को कैसे सही से बेचना है और कैसे लोगों तक सप्लाई करना है. Right now in the 2 p.m. in the at 2 a.m. at the night, if you want milk, you can, because of proper pasteurization process done by Amul. एक मिल्क की जिंदगी उसने 4 से 5 दिन तक की बना. Normally its life is more than 2 to 3 days. 4 दिन 5 दिन तो होता है ना मिल्क की जिंदगी. बढ़ा भी नहीं कभी. ठीक है, चलिए. तो so arrange logical arrangement of any events थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट तो जरूर भेजना चाहिए ना. Participants should provide refreshment. ये तो मस्त है. Refreshment is important, but actually it is not. Participants should require refreshments. Pilot works for research. Pilot works for the research to identify and study the significant issues. Means it can be applied into the pilot studies. Means जो focus group discussion है किसी issues को आप ले सकते हैं. And here is one moderator. Moderator means leaders जो इनके बीच में काम करेगा. So moderator की क्या जिम्मेदारी जानते हो आप? Moderators record हर पर्सन की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करें. एंड मॉडरेटर की रिस्पांसिबिलिटी कि सबको मौका देना चाहिए. ऐसा ना हो कि मॉडरेटर्स कुछ ही लोगों का व्यू सुने, बाकी लोगों को बस रिफ्रेशमेंट के लिए बुला रहा है. Is it? So moderator should basically record. Moderator should check that each members participant or each members views सबके views को लेकर के वो रखे. And in the some time I hope जैसे लोकसभा स्पीकर होगा or the राज्यसभा member, so that is moderator. And that moderator have sub moderator. नीचे जो बेल में बैठे होते हैं ना officers, so they have a sub moderator because all the tasks manually not possible to done by the moderator. So अगर वो कुछ calligraphic works करना है, so that is done by the sub moderator. तो moderator का sub moderator is possible in this instance. इसमें आप कर सकते हो और करना भी चाहिए. That is not any types of barrier. Next is focus group discussion. Mainly
comes after 70s. A reason being evolutions of IT and industries. Evolutions of IT and industries many new areas were identified for focus group discussion. Because knowledge is right now interchangeable और ये ज्यादा आसान है. Like we have a focus group discussion का एक सिंपल एग्जांपल है जब आप लोग WhatsApp पे कोई ग्रुप बना लेते हो 10-12 बच्चे मिलकर, तो आप क्या करते हो? वहां पर फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हो? नहीं, मेंस के कई बच्चे बना रखे होते हैं, तो वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक या इश्यूज के ऊपर पूरी क्लास में बहस करते हैं आपस में. वो दे वर डिस्कसिंग. जो टेलीग्राम्स वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलग अलग बनाए गए, जैसे सिविल सर्विस ऐसे लिखा होता ना कि ग्रुप ऑफ साइकोलॉजी, ग्रुप ऑफ जीएस, so that is again focus group discussion. तो ये ज्यादा रिलेवेंट हो गया आफ्टर 1970s. Okay, next is it has some advantage. So फर्स्ट एडवांटेज क्या हो सकता है? क्योंकि आपने जो फोकस ग्रुप डिस्कशन किया है एंड यू हैव एक्सप्लोर्ड द ऑल डायमेंशन, so your decision should be, yeah, your decision might be more healthy and balanced. Reason being because it has been checked and evaluated by different dimensions. तो क्या लिखेंगे? Provide balanced views. Provide balanced views. Second benefit क्या हो सकता है इसका? Because all participant have taken decision. सबने मिलकर के डिसीजन लिया ना, so all will support in implementing. Its best example Constitutional Assembly. Constitutional Assembly के जो members थे सबने मिलकर के सिग्नेचर किए ना. In that case सब लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करें. Each members will help to implementing the constitutions. तो आप लिखेंगे a group participants in implementations. It is an economical method. Why? Because multiple interviews has been conducted. 8 से 10 लोगों का इंटरव्यू एक ही बार हो गया और सबका व्यूज एक ही बार में निकल गया. It is economical because multiple interview conducted at a times. Next. Focus group discussion. इकोनॉमिकल है बेटे. 8 लोगों का इंटरव्यू 8 दिन में करते और यहाँ 8 लोगों को एक ही टेबल पे बैठा के इंटरव्यू कर. लाइक कैबिनेट्स. If Prime Minister discuss over any issues, I hope cabinet में 10 से 12 मेंबर होते हैं maximum का. So that 10 to 12 members
sit together on any specific issues and कैबिनेट उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देती है. इज इट ट्रू और फॉल्स? सो दैट अगर वो 12 कैबिनेट मेंबर से अलग अलग दिन में बात करके कि ट्राइब्यूनल को रिजॉल्व करना पड़े, फिर टाइम पे नेक्स्ट इट इज देन टाइम कंज्यूमिंग. नेक्स्ट इज देयर it is not only stimulates the present reality but recalling of the past event because of expertise. तो वो प्रेजेंट कोई ध्यान नहीं रखते थे, वो पास्ट की भी R&D कर डालते. नेक्स्ट इज it is flexible. Why it is flexible? Because each participant represent their views as per their choice. So each participant represent their views as per their choice. Then there is some limitations. There is some limitations, like number 1, the belief, attitudes, ideas of the participant are different. So creation of consensus is very difficult. Belief, ideas of the participant are different. तो जितने उसमें लोग हैं सबके अलग अलग हैं. Resulted that consensus over the topic is very difficult. बना पाएंगे आप consensus? Very difficult. And sometimes moderators have over influence over the groups. ऐसा होता है कि नहीं? मॉडरेटर अपनी बात ही मनवाने के लिए सिर्फ कैबिनेट की मीटिंग बुला लेता है. करंट मॉडरेटर ऐसे ही लगता था भारत में, बातें अपनी मनवाने के लिए बोलता बैठ जाओ मेरे साथ. क्योंकि पहली बार क्या भारत में ऐसे बहुत कम बार हुए हैं. नॉर्मली एमपीस लोग प्राइम मिनिस्टर को बनाते हैं. पहली इलेक्शंस में 2014 में भी 2019 में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एमपीस को बनाया. मेरी सुनना ही बात कि दैट प्राइम मिनिस्टर इज टू मच इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल. वो कह रहा आप चुनाव लड़ जाओ, आप एमपी जीत जाओगे. नहीं, इट्स बेस्ट एग्जांपल दैट Bangalore, Tejasvi Surya is just a young boy. तो उसने due to his good power of communication and good ideology, प्राइम मिनिस्टर ने उसकी बात को रीट्वीट किया और बोले इसको बनाओ, इस लड़कियों को यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बना, और माफ करना एलएसनिस लोकसभा का मेंबर बना. तो बहुत ऐसे लोग हुए. तो तभी नॉर्मली क्या होता था कि जब सारे एमपीस प्राइम मिनिस्टर को बनाते थे, मतलब सुनना ही ना, क्या मैं पीएम ने एमपीस को बनाया और एमपी ने पीएम को बनाया, बोथ हैव डिफरेंट पावर. इफ एमपीस क्रिएट्स पीएम और एमपीस ने पीएम को बनाया, इसका मतलब एमपीस आर पावरफुल. ऑफिशियली तो यही होता है ना, बट रियलिटी में आई एम टेलिंग अबाउट द रियलिटी, बिकॉज आवर प्राइम मिनिस्टर इज मोर पावरफुल. बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, शक्तिशाली ऐसे बाहुबली वाला नहीं, बट इन्फ्लुएंशियल. दैट मैन इज इन्फ्लुएंशियल. नेक्स्ट इज सो कोऑपरेटिव इंक्वायरी का एक एडवांटेज है कि इसमें जो मेंबर्स बैठ करके इन्वेस्टिगेट करते हैं उनके व्यूज कई बार रिप्रेस कर. डिसएडवांटेज है कि कई बार उनके व्यूज रिप्रेस कर दिए जाते, दबा दिए. एंड नेक्स्ट इज डिस्कशन में भी डाइवर्टेड आल्सो. डिस्कशन हो रहा है ना,
like round table conference. Have you heard about round table conference 2? महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था कि नहीं किया था? अरे विश्चित नहीं, हाँ किया था नहीं, फर्स्ट में, थर्ड में, थर्ड हुआ भी था। एक भी राउंड टेबल में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था? फर्स्ट में गूगल करो एक बार, खैर बाद में कर लेना। He has participated. So when he participated into the round table conference, so somebody asked, भाई क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, उनके लिए चीटिंग की चाय आई, मेरे लिए गुड़ की चाय आई। बात ही फिर so sometimes members may be irresponsible in that groups, अलग ही बात है, out of the box, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और आप जानते हैं पूरी दुनिया में दो जगह है, पूरी दुनिया में एक जगह है जहां से कॉन्फ्रेंस के लिए जाना जाता है, ट्रीटी के लिए जाना है। बता सकते हो जगह कौन सी है? सबसे ज्यादा ट्रीटी वहां पर हुई नहीं, जेनेवा कन्वेंशन तो है। पेरिस, पेरिस वर्ल्ड में ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी ट्रीटी हुई। पेरिस इंडिया में भी ऐसी एक जगह है जहां पर बहुत सारी ट्रीटी हुई। दिल्ली नहीं, शिमला, शिमला, शिमला राइट। तो भारत में शिमला इज इक्वल टू द पेरिस फॉर द कॉन्फ्रेंसेस एंड ट्रीटीज। शिमला समझौता याद है ना? शिमला नहीं सुना ही नहीं? शिमला एग्रीमेंट, शिमला कॉन्फ्रेंस, lot of them, not only even pre-independent, even post-independent, many conferences take place at the Shimla. Getting? Even our Santipri days also do. Santipri days एक ही तो है ना हमारे पड़ोस में, कौन सा? शांति देश कौन सा अपने पड़ोस में? भूटान, मजाक कर रहा हूँ, पाकिस्तान। Okay, then how to use focus group discussion in psychology? In a psychological research, initially again psychology is basically intangible, and its themes are basically affected by the various perspectives. So it need to be studied or analyzed from the various perspectives. For the healthy check and balance, various perspective analysis is important. Got it? साइकोलॉजी में इसकी बहुत सख्त जरूरत है और इससे बहुत सारे इश्यूज को एनालाइज किए जाते हैं और इसकी बहुत सारी आइडियोलॉजी भी है, सब टेक्नोलॉजीज भी होती हैं। बस ठीक है, इसमें इतना। फोकस ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है वो आपको समझना है। The next method. What is next method? कोऑपरेटिव इंक्वायरी का लिया हुआ है। कोऑपरेटिव इंक्वायरी, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी नहीं किया हुआ, बहुत सारे। चलो आप तो थोड़ी बोल रहे थे, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव इंक्वायरी।
कोऑपरेटिव इंक्वायरी, अगर थोड़ी सी फोकस ग्रुप डिस्कशन समझ में आ गई होगी तो कोऑपरेटिव इंक्वायरी इसी से रिलेटेड। सो लेट्स प्रोसीड कोऑपरेटिव इंक्वायरी। As name suggested, cooperative inquiry. Cooperative inquiry. So, cooperative inquiry. Here, first thing, it is different from focus group discussion. Focus group discussion is just gathering the opinion from the participant. But into the cooperative inquiry, here will be given a problem, and that problems need to some solution, और उस प्रॉब्लम की हम लोग सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करते हैं, राइट? दैट सॉल्यूशन produced by the groups, that solution produced by the groups. So cooperative inquiry में डिस्कशन था, माफ करना, फोकस ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक को डिस्कस करते हैं. But what about the cooperative inquiry? There will be a problems, and the problems have solutions. Problems have solutions. हाँ, अब देखो फर्क कैसे होगा कि दिस अगेन देयर विल बी सम ग्रुप ऑफ पीपल्स, इसमें भी क्या होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे, बट दिस पीपल्स हैव अंडरस्टैंडिंग ओवर द प्रॉब्लम्स. एग्जांपल, some of must have a practical knowledge, some of them have experiential knowledge, some of them have a different perspective like critical knowledge, right? Here is the critical knowledge and propositional knowledge. Getting my points? Practical knowledge, experiential knowledge, other is propositional knowledge are required. अब ये अलग कैसे बेटे? अलग ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज वाला हो सकता है 2 व्यक्ति ले लिया, एक्सपीरियंशियल वाला 3 ले लिया, क्रिटिकल वाला 4 ले लिया, इधर हो सकता है 3. एंड उसमें क्या था, ईच मेंबर हैव इक्वल weightage and importance, but here is that each members have expertise as per their expertise importance. तो कोऑपरेटिव इंक्वायरी में अलग है, इसमें प्रॉब्लम का एक क्रिटिकल समझ रखने वाला चाहिए, रियल हाँ कुछ हद तक लगता है, बट कोऑपरेटिव इंक्वायरीज में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं. Focus group discussion is not only the discussion over the any problems. They will take any topics. So, क्या लिख सकते हो आप इसमें? There are the 4 different knowledgeable peoples. अच्छा, cooperative inquiry को define नहीं किया क्या? वो लिखो. Cooperative inquiry means when researcher wants to explore any existing problem
want to explore any existing problem and develop various perspective over the issues to find solution for taking decision decision. So cooperative inquiry have various features. Number one, first, collecting the basic information about the problem. Basic information about the problem. Then complete immersion over the topics. Complete immersion. Like our CBI, our AD, our other agencies are working cooperative inquiry. पहले basic information वो collect कर लेते, collect कर लिया कि अनीता के घर में बहुत सारा ब्लैक मनी छुपा कर नहीं कर रखी है, करते हैं ना बीइंग एन आईएएस ऑफिसर। तो एडी वाले पहले क्या करते हैं, एक बेसिक डेटा कलेक्ट कर लेते, और एडी इस बार चर्चा में है तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो सर ने आपको पढ़ाया। बिकॉज ईडी अपॉइंटमेंट की प्रोसेस क्या है, कौन करता है, उसमें सर्च कमेटीज एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट। सो ईडी ने बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, देन एमर्जिंग इंटायर, एमर्ज समझ में पूरा तरह से डुबकी लगा देना, emerging in that issues पूरे टॉपिक के अंदर डिटेल में जाती है, then taking decisions. Third stage is what? Then taking final decisions. तो means cooperative inquiry में पहले basic data collect किया, after collecting basic data, then researcher collect data about the main issues. After collecting the main issues data, then there is a डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए वर्क करना शुरू कर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए वर्क करना शुरू कर देगा। सो दैट इज कोऑपरेटिव। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव इंक्वायरी कैन बी बोथ इंफॉर्मेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। सीबीआई के वक्त और कैबिनेट के वक्त में आपको डिफरेंस लगता है, नहीं लगता है? एनफोर्समेंट एजेंसीज के वक्त एंड कैबिनेट्स के वक्त दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं क्या? बस बहुत अलग होते हैं। सेम ऐसे कोऑपरेटिव वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द फोकस ग्रुप डिस्कशन। या वहां इंटरव्यू है, देयर इज नो इंटरव्यू, there is expertise and each expertise will work as per their understanding. वो अपनी तरह की चीजों को fetch कर लेगा, other expertise will fetch different types of data, right? So that again in a cooperative inquiry, a residual and practical information are important to develop
any conclusion या for the development of any. एक नाम बहुत फेमस इसमें Peter Reason has mainly works on cooperative inquiry. He said, sir, it is a research cycle. क्यों? क्योंकि आप एक प्रॉब्लम आई उस पे कोऑपरेटिव इंक्वायरी किया, फिर नई प्रॉब्लम्स, नए रेट्स, so that it is a basically cyclic in nature. ये भी लिख लो. According to Peter Reason, it is cyclic in nature. Cyclic in nature, which starts from इनिशियल फेजेस टू वही फर्स्ट फेज. तो एक फेज से स्टार्ट होगा और उस फेज से स्टार्ट होकर के मूव करते करते नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट फेज में आएगा तो अगले फेज. सो फर्स्ट फेज वही इनिशियल फेज में जब डेटा कलेक्शन का आएगा, इमरजेंस का आएगा, फिर वो डिसीजन मेकिंग की फेजेस में जाएगा. टेक द एग्जांपल ऑफ आरुषि मर्डर केस. आरुषि मर्डर केस had, I hope, right? That was a Noida's girl. Suspectively, it was killed by her father and mother. Even it is again, I think, under the discourse, but finally they sent their miss mother and father both sent to the jail. क्योंकि ये कहा गया कि इन्होंने ही मारा है और इनकी बेटी थी, कुछ उन्होंने आपत्तिजनक कंडीशंस में देखा होगा, so that they have killed the servant and daughter. So अब कोऑपरेटिव इंक्वायरी के साइकोलॉजी में होती है. हाँ सर, इट इज यूज्ड एज थेरेपी. इन थेरेपीज में इसका यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द डिसएडवांटेज ग्रुप्स बिहेवियर्स. डिसएडवांटेज ग्रुप के साथ में बहुत सारे डिसएडवांटेज ग्रुप गॉट लाइक LGBT, women's child issues, and different types of vulnerable groups are there. So for the resolving the problems of different vulnerable groups, we can do cooperative inquiry in psychology also. Other is it can be applied especially into the therapeutic treatments of the, जैसे therapies में भी कर सकते हैं, because in a therapy like group of doctors, जैसे आप मेडिकल साइंस में देखो तो एक से ज्यादा डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और वो सब, कोई एनेस्थीसिया का डॉक्टर है तो वो बॉडी को चेक करके एनेस्थीसिया दे देता है, तो कोई उसको सर्जरी करेगा, तो कोई उसमें ब्लड प्रेशर और हार्ट का डॉक्टर रहेगा. सो ऑल विल sit together and then they will take decisions, और वो डिसीजंस लेते हैं और फिर वो कंक्लूजंस को प्रोसीड कर लें. बस इतना. आगे अगला पॉइंट, अगले बसेस में इतना बेटे एडवांटेज डिसएडवांटेज को लो. नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड. समझ लो, लिखेंगे कल. Brainstorming means when groups or individuals sit together and to create something new. तो brainstorming कुछ नया बैठ करके सोचने के लिए. एग्जाम्पल प्लानिंग कमीशन, और उसका नया नाम क्या बन गया? नीति आयोग. सो नीति आयोग इज सिमिलर टू brainstorming. Cabinet is equal to the focus group discussion, and enforcement agencies are equal to the cooperative inquiries. Get it? So brainstorming में क्या होता है कि सबको कुछ टॉपिक्स के ऊपर अपने आइडियाज, व्यूज एंड परसेप्शंस को डेवलप. So each of the members, each of the persons will sit or stand there
to develop their ideas and views over the any specific. सो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए। और क्यों? क्योंकि जितना अच्छा इसको थिंक टैंक बोल सकते हो। एवरी कंट्री नीड थिंक टैंक एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशंस नीड थिंक टैंक एंड एवरी social agency required think tank. And in psychology it is important because that brainstormings helps to develop new ideas, new theories and new pictures over the any issues. So it is important. Get it? So इतना ही रखते हैं हम लोग आज के लिए। और अभी क्या बाकी है इसमें? दो कल और हो जाएगा। आप क्वेश्चन लिख लो इसके ऊपर। एंड देयर इज Shruti. So extremely Shruti, sorry because I have not given to your evaluated copy. मैं आपको शेयर कर दूंगा कल तक। And for the Nita it is available. So write down. Question number 21 that has come in 2017. It is in 150 words. Question is, how can you use focus group discussion to promote use to toilets in rural areas? Question, how can, मिल गया ना क्वेश्चन आपको? हाँ, सो एक ग्राउंडेड थ्योरी का भी है, मिल गया? अच्छा, ग्राउंडेड थ्योरी का आपने शायद लिखा भी है या नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ। So write at least one question from today's class. Promote uses to toilets in the rural areas. तो इसके लिए हमें कौन सा मेथड लगाना है? Focus group discussion, because toilet issues is not a small issues. Open defecation is one of the big threat. So for that you need to discuss. Okay, thank you for the class. Remaining we will do on tomorrow.